This conference will now be recorded. So now the first of all, I'm just start the introduction of cloud. Like what is cloud? So what is cloud? If I'm talking about a cloud, the cloud services, or either I'm talking about cloud. So the cloud is a name of the service. The cloud is a name of the service. Okay. Service. So cloud जो है ना वो एक सर्विस का नाम है. Got it? And this service provided by multiple cloud service provider. एंड जो भी क्लाउड की सर्विसेज हैं वो मल्टीपल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा प्रोवाइड करें, सच एज लाइक AWS, Azure, GCP, IBM Cloud, Alibaba Cloud, VMware Cloud, Oracle, Salesforce, and many more. इसके अलावा भी काफी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो हमें क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड करते हैं. When you use any cloud services, pay as per the usage. और उसके हमारे चार्जेस क्या होते हैं? As per the usage होते हैं. Like look like electricity bill. Okay. तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी हम जितने टाइम के लिए यूज करते हैं उतने टाइम के हमारे चार्जेस लगते हैं. द सेम एज द क्लाउड सर्विस. तो क्लाउड सर्विस का भी कॉन्सेप्ट है. द क्लाउड इज द नेम ऑफ द सर्विस and this service provided by the multiple cloud service provider. Look like I am talking about the cloud service provider. Now if I am talking about AWS, the parent company of AWS is look like Amazon. Now Azure is a parent company of Microsoft, and same is like a GCP, the parent company of Google. Same as other is like a Salesforce. Got it the point? So now this is a point. The cloud is the name of the service. Look like the service name is AWS and it's the parent company of Amazon. Service name is Azure, the parent company of Microsoft. Service name is GCP, the parent company of Google, and service name is Salesforce, and the parent company is also Salesforce. So now that this is a service provider, this service provided by the multiple cloud service providers such as the AWS, Azure, GCP, IBM, Alibaba, VMware, Oracle, Salesforce, and one more. When you use any cloud service, pay as per the usage. If you are using any cloud service, you can pay as per the usage. Right. Got it the point? Yes. So look like a Jio. The Jio, the parent company of Reliance Industry. Yes or no? The same as these are the service provider, and service name is AWS. Clear the point? Yeah. Now, after that, I'm just come to which type of resource provided by the cloud service provider. The next point is which type of resources provided by the cloud service provider. So now
the cloud service provider provide a different types of services. Any idea name of the services? The cloud service provider provided different kinds of services, cloud services. Yeah, so software as a service. So cloud service provider provided different kinds of services such as infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. Now, if I'm just talking about like these all service, infrastructure meanings like I'm just asking like what is cloud? The cloud is the name of the service. This service provider by the multiple cloud service provider. When you use any cloud service, pay as per the user. Either you use infrastructure as a service, either you platform as a service, or either you use a software as a service. So now what is the difference of these services? First time understand what is the difference between these services. So now the even like your good name, give me a minute. So your good name, Navtesh. So Nasir, you can use MS Office. कभी एक्सेल पे काम करा है आपने? हाँ जी, हाँ जी। या तो देखिए एक आपने एक्सेल पे काम करा है और लाइक एक गूगल ड्राइव का भी एक्सेल है ऑनलाइन। ओके। गूगल सीट काम करा है उस पे? हाँ 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 जी, हाँ जी। व्हाट इज द डिफरेंस? दोनों में डिफरेंस क्या है? उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ आर द सेम। जस्ट डिफरेंस, वो डिफरेंस क्या है मैं वो आपको पहले बताता हूं। सो अगर आपने वो चीज समझ लिया तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे इन तीन सर्विसेज के बीच में। व्हाट इज माय पॉइंट नाउ कि आप जो अभी तक एमएस ऑफिस यूज करते थे उसके लिए यू कैन बाय अ लैपटॉप, देन इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम, then install OS operating system, then you install a MS Office, and then create a Excel or Word file. Got it? This is a concept of infrastructure as a service. Okay. Now, how? Like first you can buy a laptop. The laptop is a part of infrastructure. Got it? As well as the operating system is also part of infrastructure. Got it the point? Yeah. After that, second layer is of MS Office. You can install a MS Office. Right. Yes. लाइक कि आपका टास्क था कि एक्सेल की सीट बनानी है। गॉट इट माय पॉइंट? सो एक्सेल को बनाने के लिए कोई तो प्लेटफॉर्म चाहिए आपको। और वो प्लेटफॉर्म किसका था? एमएस ऑफिस। इफ यू आर एमएस और इफ यू आर नॉट इंस्टॉल एमएस ऑफिस इन अ सिस्टम, क्या आप वर्ड की या एक्सेल की फाइल बना सकते थे? इज इट पॉसिबल? नो। नाउ बट अगर मैं कहता हूं अगर आपको एमएस ऑफिस भी इंस्टॉल करना है तो उससे पहले तो आपको लैपटॉप और ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो क्या आप एमएस ऑफिस इंस्टॉल कर सकते थे? और एमएस ऑफिस नहीं है तो क्या आप अपनी कोई भी एक्सेल या वर्ड की फाइल बना सकते थे? नहीं। नाउ दिस वर्ड फाइल इज अ लुक लाइक अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। व्हाट इज द मीनिंग? विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर आपने अपनी वर्ड की फाइल बनाई है जिसको आप एक्सेस करके उस पर वर्कआउट कर। गॉट इट माय पॉइंट? यस सर। या अदर वर्ड में मैं एक और एग्जांपल देता हूं। लुक लाइक कि आपका बैकग्राउंड क्या है? आर यू वर्किंग समवेयर? नॉट राइट नाउ सर, आई okay now the other example is like the other example look like
मेरा एक सिंपल सा सिनेरियो है कि आपको एक आरोग्य सेतु ऐप बनानी है, लाइक देयर वन प्रोजेक्ट इज कमिंग, द आरोग्य सेतु ऐप. Got it? Now the first, I'm go to the market and buy a server. Okay. Buy a server. Got it? Instead buy like you can buy like a RAM, hard disk, motherboard, network, and OS, and many more. Now after that, if you can go in a market or either go in a narrow place, you can buy one laptop. First you select the hardware configuration, then shopkeeper I say which platform you use. Yes or no? Yeah. Platform like a application, like your project is based on like a Java or either a Python, so now you can install Java. Okay. Or either you install Python, either you install SQL, either you install like a MS Office. If you watch a video, you can install a VLC media player. Yes or no? Yeah. And after that, with the help of these platform, now you can deploy your Word file or either an application. Okay. Yes or no? And now you Yes. can deploy your Arogya Setu app. And now this is a software as a service. So this is a part of infrastructure. This is a part of platform. और इन दोनों के हेल्प से जो आपकी एप्लीकेशन बनी है, दिस इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. Now the Salesforce is a part of platform as a service, and it is a part of software as a service. Got it? Now if you go for a developing, so now it is for developer, and now this is for admin. If you use a Salesforce developer part, so now the benefit, now the developer write a code and create a customized component like as per the your requirement. Got it? कि like एक blank एक land दे दिया है, आपको मैंने बोला कि इस पे घर बनाना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग घर बना रहे हैं. दिस इज कॉल्ड अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. तो आप उसकी नींव अपने अकॉर्डिंग रख रहे हो. Got it? Got it my point? Yes, sir. Now the next point, क्या मैं कह रहा हूं कि ऑलरेडी एवरीथिंग है, आपने क्या करा, फ्लैट बुक करना है, तो फ्लैट जैसे बना हुआ है वैसे ही आपको लेना पड़ेगा. Right. Got it my point? दोनों में फर्क दिख रहा है. और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस इज लुक लाइक अ लैंड, वो आपकी जमीन है. जमीन. तो पहले आपने सिस्टम खरीदा, उस सिस्टम पे टू थिंग्स हैं, या तो आप बना हुआ फ्लैट ले लो, इट्स कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. तो आपको कंप्लीट सारी चीजें मिल जाएंगी. या आप अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहते हो तो आपने क्या करा, जमीन खरीदी और आप अपने अकॉर्डिंग डिप्लॉय कर लो प्लेटफॉर्म. जैसे नींव भरोगे वैसे ऊपर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा. राइट. नाउ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. हाँ, यस सर. या और एग्जांपल दूं? आप बता देना, मेरे पास डिक्शनरी में एग्जांपल बहुत है. नहीं मैंने किया हुआ सर, तो आइडिया. Okay, so myself Rakesh, I have a 15 years of experience and like 7 years I'm working in a cloud. Okay. So the cloud and DevOps also. Yeah. So this is my core domain. But ma'am told me, sir, please start the one batch. So that's why I'm just giving the special time for you, because I'm available in my home and I'm not teach any candidate, but no battery. So I'm continue with you till end if you like my class. So now after that, now the next point is coming, like these are the things. So like a infrastructure service, like if any company, yeah, anybody required a virtual server,
or either anyone like need like a virtual storage, like a store a data, Mhm. and like anybody like virtual databases. Mhm. So it's use a cloud. Okay. Now next point, why cloud? क्लाउड ही क्यों? क्वेश्चन बनता है ना, हाँ जी। क्लाउड के अलावा भी तो यूज हो सकता है ना. हाँ. सो इसका भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं. नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ रिसोर्स. सो दिस इज माय रिसोर्सेज एंड नाउ choice is your, either you can buy on resource or either you use a cloud resource. Both are the same. Got it? Okay. So now when you use any resource in a cloud service, so cloud service की अगर आप कोई भी सर्विस यूज करते हैं, either you deploy a virtual server, either deploy storage account, or either you run database for either any cloud, either AWS, Azure, GCP, IBM, VMware, Alibaba, or many more. You can pay as per the uses. अगर आप कोई भी resources किसी भी cloud service provider पर deploy करते हैं तो आपको उसका pay करना पड़ेगा as per the uses. Got it the point? Okay. Now, why the cloud industry move in a Salesforce, or why cloud industry move in a like why industry move in a cloud? तो ऐसा मार्केट में क्या है कि इंडस्ट्रीज क्लाउड पे मूव हो रही है, कुछ बताएंगे? एनी आइडिया? कॉस्ट बजट कंपनीज का होगा सर एक इशू. मतलब क्लाउड. One point is cost, and सेकंड इज क्या कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत कम है. okay, और कहीं एनीवेयर एक्सेस सिस्टम से कर सकते हैं. okay, और सर्विसेज और क्या कहते हैं कि रेडीमेड सॉल्यूशंस मिल सकते हैं. देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ नवतेज जी, नथिंग इज रेडीमेड. ओके. कोई भी चीज रेडीमेड नहीं है, सारी चीजें आपको बनानी पड़ेगी. ओके. देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ वाई क्लाउड और फिर क्यों बनानी पड़ेगी. वन बाय वन हम चलते हैं, ठीक है? तो फास्ट तो खत्म नहीं करना, मुझे बता दीजिए, क्योंकि अगर टाइम बाउंडिंग में आप बांटोगे तो मैं फिर उसी हिसाब से चलूंगा. अगर आप फ्रीडम दोगे तो हम प्रॉपर डिटेल में चलेंगे. ठीक है? तो टाइम से फिनिश हो, मतलब टाइम से फिनिश हो लेकिन प्रॉपर हो. गॉट इट? हाँ सर. तो नाउ द नेक्स्ट की, देखिए सिंपल सा है. अगर आपने अपनी एक कार खरीदी है, तो नाउ यू कैन बाय अ कार like pay in 10 lakh. This is a fixed cost, आपकी ब्लॉक हो गई. ओके. आफ्टर दैट ड्राइवर कॉस्ट प्लस है, पेट्रोल कॉस्ट प्लस, पार्किंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, डैमेज कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, ऑल इज प्लस. ओके. यस और नो? यस. But if you can book a Ola, so Ola is a service. राइट. अगर आपने ओला कैब बुक करी है, so like there is a no driver cost, no fuel cost, no maintenance cost, no damage cost, no parking cost, and no any other cost. You can pay as only service. ओके. Pay only सर्विस. service. Look like a same कि if you can, अगर आप अपने घर में रहते हो, लाइक एसी या फ्री रेफ्रिजरेटर कोई भी चीज खराब हो जाता है तो आपको खुद से रिपेयर कराना पड़ेगा. बट इफ यू गो इन अ होटल और पीजी, तो क्या आप वहां पे रिपेयर कराएंगे? नहीं कराएंगे. There's the same concept. The before cloud, the every company buy on infrastructure. On infra.
Got it the point? Yes, sir. Now the before cloud, the every organization used or buy on infrastructure such as servers, storages, databases, software, network, devices, and other. Okay. But when organization use cloud services, no need to buy infra. It's pay rent as per the uses. Look like if you go for like a 6 month for Goa, can you buy a home? 6 महीने के लिए क्या आप अपना घर खरीदोगे? नहीं. आप क्या करोगे? या तो पीसी लोगे या फ्लैट लोगे या होटल बुक करोगे. Right. Same as कि the before cloud, like other any company need a project. So पहले क्या होता था कि कंपनीज के साथ सबसे बड़ा चैलेंज क्या था before cloud कि like there's a one organization is available, like the organization name is a HCL. Yeah. There's a one project is comes for this HCL, like a same as like a deploy any app. And this project deploying 2 locations, like one is Delhi and second is Mumbai. Like the project duration is only 6 months. The project estimate cost is like a 10 crore. And the company gives the advance of like 4-5 crore, 50% payment. Now you can start a project, like if you can start a project for these 2 locations, like your infrastructure cost is 4 crore. Your infra cost is 4 crore. Can you start the business? Right. Why? सारा बजट तो इंफ्रा में चला जाएगा. बिल्कुल, तो सारा अमाउंट हमारा इंफ्रा में चला गया. इसके बाद अदर एक्सपेंसेस, सैलरीज, क्योंकि द नेक्स्ट पेमेंट इज कम्स आफ्टर कंप्लीट 75% प्रोजेक्ट. Okay. अब अगर आपने 4 करोड़ रुपीस यानी कि अप्रोक्सीमेटली द 80% पेमेंट इंफ्रा में लगा दी जो आपको एडवांस मिली, तो नाउ यू कैन जस्ट स्टार्ट द क्रॉस कटिंग. आप अपने एक्सपीरियंस की जगह फ्रेशर्स हायर करो और प्रोजेक्ट भी आपका डिले होगा. Okay. Got my point? Second, कि this project duration is 6 months. Now if कि आप इस प्रोजेक्ट को ले भी लेते हो, start this project, so after 6 months के बाद आपको कितना लॉस है? The entire 4 करोड़, क्योंकि there the infrastructure cost आपकी पड़ी हुई है. Right. और it's not mandatory कि the next project कब आता है. So आपको मेंटेनेंस कॉस्ट भी है सेम कि आप गाड़ी चलाओ या मत चलाइए, बट आपको गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट तो देनी पड़ेगी. लाइक इफ यू दिल्ली या मुंबई में आपने स्टार्ट करा, 6 मंथ के बाद आपने कंप्लीट कर लिया, और कंप्लीट करने के बाद अब आपका प्रोजेक्ट फिनिश हो गया, बट अभी आपका 10 लाख रुपीस मंथली रेंट स्टार्टअप है. और अगर आपका 1 साल तक या 2 साल तक आपके पास कोई प्रोजेक्ट इन लोकेशन पे नहीं आता है, तो वो जो रेंट है आपका, उसमें भी आपको 2 करोड़ रुपीस रेंट और पे करना पड़ जाएगा. इट्स अ रियल सिनेरियो, यस और नो? तो नाउ क्या आप इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे? कोई भी कंपनी इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं करेगी. बट अगर मैं कहता हूं नाउ द योर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इज कम्स 6 मंथ अप्रोक्सीमेटली लाइक 20 lakh, then Possible. completely possible. Now क्या आपने कहा why I am buy infrastructure, मैं अपना घर क्यों बनाऊं? मैं 6 महीने के लिए तो मैं रेंट पे ना रहने लग जाऊं. why I am invest 5 crore. आप ऐसी जगह देखिए जहां पर मेरे को बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए. ठीक है.
तो अगर आपको बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे मिलेगा? क्लाउड। क्लाउड। क्लियर द कॉन्सेप्ट? हाँ सर। आफ्टर दैट क्लाउड तक पहुंच गए हैं। क्लाउड भी आपकी दो टाइप्स की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। क्लाउड मेथड की अगर हम बात करें या क्लाउड इंफ्रा की बात करते हैं, ओके। it provides two types of infra. Now the one infra is compute and second is compute less. So now the compute less is called a Salesforce. ओके। So Salesforce जो वर्क करता है वो compute less infra पे काम। ओके। So any idea compute and compute less? नहीं सर। चलिए आपको पता है, अब मैं आपको बता रहा हूँ और आप कहोगे हाँ। कंप्यूट और कंप्यूट लेस। तो अगर मैंने क्लास स्टार्ट करी थी सर, मैंने आपसे सबसे पहले क्या पूछा था? कुछ एक्सेल से रिलेटेड पूछा था? हाँ जी, हाँ जी। क्या पूछा था सर, बताइए। एक्सेल और गूगल शीट्स। या सो गाइस, सर जो आपने अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करा था ना वो कंप्यूट है, ओहो, अच्छा। और जो आप गूगल ड्राइव पे यूज करते हो ना वो कंप्यूट लेस है। राइट। यानी कि आप एक्सेल ही यूज कर रहे हो दोनों तरफ, बट एक में आपको अपना फिजिकल डिवाइस, एक लैपटॉप आपने लिया, उस पे एमएस ऑफिस इंस्टॉल करा, देन आप एक्सेल एक्सेस कर रहे हो। तो वहां पर कंप्यूट सर्विस मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो रहा है? इन्वॉल्व हो रहा है। बट इन गूगल ड्राइव नथिंग इज इन्वॉल्व। आप गूगल ड्राइव पे गए, एक्सेल सीट पे क्लिक करा और आपकी एक्सेल ओपन होके आ गई। सो अगर आप गूगल ड्राइव पे जाते हैं तो आपकी कंप्यूट की कॉस्ट बच गई। यस और नो? यस। द सेम कॉन्सेप्ट है कि सेल्स फोर्स का भी सेम कॉन्सेप्ट है कि आइदर या तो आप अपना एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क या सीआरएम कंप्यूट सर्विस पे बनाइए अपना, या आप बनी हुई कंप्यूट सर्विस यूज कर लीजिए। ओके। गॉट इट माय पॉइंट? राइट। सो अगर आप बनी हुई सर्विस यूज करना चाहते हैं तो यू ऑलरेडी बनी हुई एक सर्विसेज है जिसका नाम है सेल्सफोर्स। ठीक है। या आइदर अगर यू आर ए डेवलपर, आप सेल्सफोर्स मत यूज करिए, आप अपनी बना लीजिए। ओके। कॉन्सेप्ट इज क्लियर? लेकिन आप अपना बनाएंगे तो क्या करेंगे? आपको अपने सर्वर्स खरीदने पड़ेंगे, सर्वर्स पर्टिकुलर लोकेशन पे लगाने पड़ेंगे, डेवलपर्स लगाने पड़ेंगे, वो उस टाइप का सेटअप रेडी करेंगे, देन डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्सेप्ट इज क्लियर? हाँ जी, हाँ जी। लाइक कि अगर मैं क्लाउड की बात करता हूं, नाउ आई एम जस्ट लॉगिन की, आई एम जस्ट गो टू द पोर्टल इन Chrome. Okay. Now either you can deploy in Azure cloud. I'm talking about like an Azure, where is Azure? Yeah. So choice is your key. Either कि आपको compute service बनानी है, so now you can create a server, or either you create in AWS. So now I'm just looking with AWS also. So now I'm just looking with AWS. So this is the AWS portal account, and this is like a Microsoft account. Got it? Okay. Choice is your कि अगर आप compute service बनाते हो for any cloud, if you deploy service, so now first you can select a location. कि क्लाउड के पास आपको सबसे पहले लोकेशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। लोकेशन इज कॉल्ड अ रीजन। लोकेशन इज कॉल्ड अ रीजन। तो रीजन का मतलब है कि अगर आपको अपना घर बनाना है तो सबसे पहले आप क्या सिलेक्ट करोगे? अपनी कंट्री सिलेक्ट करोगे।
एंड कंट्री के अंदर यू कैन सिलेक्ट ए स्टेट। Okay. अगर आप अपनी कंप्यूट सर्विस यूज करते हैं तो नाउ यू कैन सिलेक्ट अ लोकेशन, यू कैन डिप्लॉय योर इंफ्रास्ट्रक्चर इन विच लोकेशन। एंड लोकेशन का भी सिलेक्शन किस तरीके से होगा? नाउ सिलेक्शन इज द प्रोसेस कि लाइक you start a business like the 70% user is available in India and remaining 30% user is available in out of India. So where you deploy your infrastructure? India. Yeah. Why? Because the 70% user is available. So this is a process. Like if you can start the startup, so where is your target group? Okay. तो जहां पर भी आपका टारगेट ग्रुप होगा उसी के अकॉर्डिंग आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करेंगे। Yes or no? Yeah. Yes. Yeah. Give me a second. So same concept है कि like if I'm available in India, so now I'm select a Mumbai region. Or like if you go for like Azure cloud, so like if you create a server, now you can select create a server. If you can deploy for because I'm deployed in multiple cloud services providers, so I'm just work with AWS, Azure, and Salesforce. And now if you can, so you can also select a country, like in which region you can deploy your infrastructure. Okay. Like either I'm deploying US location, like my client is available, so I'm select a US. Right. After that you can just click on server. अगर आप cloud पे अपना infrastructure ही अपनी कुछ की compute service है, so now you can select which operating system you use. Either you use a Linux or either you use a Microsoft. What is the hardware configuration is required? Like how many GBs RAM is required? Like choices where you need a 1 GB CPU, 1 CPU, 1 GB memory, and 2 CPUs and 4 GB memory. And this is a charges is available like a $2, $3, or $5. So this is a use for compute service. So now if you can deploy infrastructure, so if you can deploy infrastructure or you use a compute services, so now you can deploy infrastructure either Azure, either a GCP, or either a AWS, because these all three provide these three services. Okay. But the Salesforce only work only on platform as a service and software as a service. Okay. Salesforce is not use a infrastructure as a service. Okay. Because the Salesforce completely use a compute less. That means if you are logging with the Salesforce account, so now that this account and already this software, this is a programming and this is a console is already deployed. Like if you use an admin, you can use a drag and drop features and create a app or other things. Or either if you are a developer, you can create an object, or with the help of object, you can create a object or component. Right. Got it the point? Yes, sir. So this is a basic introduction of cloud. Right. Now we start Salesforce. Yeah, enough for today. This is the first class. Choice is yours. ठीक है. बताइए सर, कंटिन्यू करें या इनफ फॉर टुडे? इट्स ओके सर, आपकी मर्जी है. आपका इंट्रो था वैसे ही. नहीं, मेरी कोई मर्जी नहीं सर, आप जैसा कहोगे. मैं क्योंकि मेरा देखिए कंसर्न इतना है, थोड़ा पढ़ो बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. हाँ सर, ठीक है ना? आप उतना पढ़िए जितना आप लर्न कर सको, दोबारा से नोट्स बना सको. ओके. ठीक है ना? मेरा थोड़ा सा लॉजिक और मेरा जो थोड़ा कंसर्न है ना, मैं उसी तरीके से चलना पसंद करता हूँ. नो इशू सर, नो इशू. तो अगर हम क्या करते हैं, थोड़ी देर और पढ़ते हैं, थोड़ा सा सेल्सफोर्स के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं. बाकी आइडिया तो आपको थोड़ा बहुत हो गया होगा क्लाउड के बारे में, तो डोंट वरी. अब आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्सफोर्स. सो व्हाट इज सेल्सफोर्स? तो सर अब बताइए सेल्सफोर्स के बारे में, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में जो पहला क्वेश्चन पूछा था ना, वो पूछा था व्हाट इज क्लाउड. तो
क्लाउड में आपने मेरे को सेल्सफोर्स बताया, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ सेल्सफोर्स क्या होता है? CRM एक तरीके से एज अ कंपनीज के लिए जो सेल्स में ज्यादातर या काफी काम करते हैं बिजनेस सॉफ्टवेयर की यूसेज, तो Salesforce is providing platform as well as services to companies. चलिए सर, सो मैं ही बताता हूँ, आप बोल रहे हैं. सो नाउ द अगेन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेल्सफोर्स इज अ फेमस कंपनी So now the Salesforce is a famous American cloud-based company that provides CRM services, Right. customer relationship management service. Now, Salesforce is a popular CRM tools for support, sales, and marketing team worldwide. Okay. Why is worldwide? Because it's a cloud-based, and cloud-based means is there's a no anyone found a location in which location Salesforce infrastructure is available. सिर्फ documentations है. Look like at distance कि आप ट्रेनिंग ले रहे हो, but in which location? मैं आपके लोकेशन ट्रेस नहीं कर सकता ना आप मेरी लोकेशन ट्रेस करते हैं. This is concept of a virtual. Right. बट फिजिकली आप अवेलेबल, तो मैं बता सकता कि नहीं मैं और सर तो दोनों लाइक नोएडा अवेलेबल है. बट वर्चुअली का मतलब है, तो नाउ द सेल्सफोर्स इज अ पॉपुलर CRM टूल फॉर सपोर्ट सेल्स एंड मार्केटिंग टीम इन अ वर्ल्ड वाइड. Got it the point? Yeah. Now, next point is Salesforce Service services allow business to use cloud technology to better connect with partners, customers, and customers. Look like a Flipkart. लाइक फ्लिपकार्ट की मजलीस है कि लाइक आज आप किसी शॉपकीपर के पास मार्केट में शॉप करते हैं तो आप बेटर नहीं है, बट आज आप फ्लिपकार्ट से देखिए हम इजीली कनेक्टेड है. घर बैठे हम सारी डिटेल्स करते हैं. फ्लिपकार्ट हमें अच्छे अच्छे नए नए ऑफर देता रहता है, बट ग्रोसरी से रिलेटेड और एनी अदर से रिलेटेड. बट जो हमारे घर के आसपास नीचे शॉप्स हैं, क्या वो हमें कुछ ऑफर देते हैं? नहीं ना. सो दिस इज अ टर्म्स की चीजें वो ही हैं, बट एक जो स्ट्रेटजी है ना, काम करने का तरीका है, वो चेंज हो गया है. लाइक कि स्मार्ट टीवी और नॉर्मल टीवी दोनों में डिफरेंस सर आपको पता होगा. यस. आज के टाइम इंडिया में मैं कहता हूं अप्रोक्सीमेटली 35% लोगों के पास स्मार्ट टीवी है, बट आफ्टर 15 years
15 साल के बाद क्या होगा? 99% लोगों के पास घरों में स्मार्ट टीवी आ जाएगा। द सेम कॉन्सेप्ट कि चीजें मूव हो रही हैं, और अगर हम उसके हिसाब से अगर हमने अपने आप को चेंज नहीं करा ना, तो हम खुद मार्केट से मूव हो जाएंगे। सेम कि आजकल लोग इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं और उनको इजी एक्सेस चाहिए। वो चाहते हैं कि एक जगह बैठे बैठे हमें सारी चीजें मिल जाए ना। द Salesforce service allowed a business to use cloud technology। तो Salesforce ने क्या करा है कि बिजनेस तो कर रहे हैं, बट उसको वर्ल्ड वाइड लोकेशन पे क्लाउड का मतलब है एक वर्ल्ड वाइड लोकेशन पे मूव करा दिया। लाइक कि आपकी शॉप आपके घर में ना रह के उसको उन्होंने इंटरनेट पे डाल दिया, और कोई भी इंटरनेट से एक्सेस करके आपको ऑर्डर कर सकता है और आप उसको खाना या सामान डिलीवर कर सकते हैं, लुक लाइक जोमेटो। यस और नो? खाना पहले होटल में बनता था, लेकिन आज क्या एक ऐप आ गई है, क्योंकि क्लाउड पे मूव हो गया है, ऐप हमने मोबाइल में डाउनलोड करी, ठीक है, और उससे ऑर्डर करा और खाना डिलीवर्ड हो गया। क्या हुआ? जस्ट सम चार्जेस हमने एक्स्ट्रा पे करे। बट जोमेटो नहीं होता तो क्या होता? एक बंदा कैंडिडेट जाता, बाइक स्टार्ट करता, नियर बाई होटल पे जाता और लेके आता। गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट इज Salesforce CRM campaigns can track customer activity। लाइक कि आज आपने अगर कहीं पे रजिस्टर्ड कर दिया, तो वो करते कि आपने कितनी बार विजिट करा है। अगर आप कोई चीज 3 से 4 बार विजिट करते तो उसी से रिलेटेड ऑफर आपके पास आने स्टार्ट हो जाते। सो कस्टमर एक्टिविटी, मार्केट टू कस्टमर, लाइक इफ यू कैन गो इन लाइक अ बिग बाजार, और आप वहां पे 1 से 2 बार गए, अब आपने वहां पर अपनी एंट्रीज दे दी, तो आपने अपने डेट ऑफ बर्थ, अपने अपने मोबाइल नंबर 2 अपडेट करा दिया। अब उन्होंने क्या अपनी मार्केटिंग स्टार्ट कर दी, कैंपेनिंग स्टार्ट कर दिया, ऑफर निकाल दिया, बाय 1 2 बाय 1 गेट 1 फ्री। गॉट इट? सो दीज आर द कस्टमर एक्टिविटीज की कस्टमर क्या चीज विजिट करके गया, क्या चीज के लिए उसने पूछा। गॉट इट? आपने एक चीज खरीदी, 2 चीजों के बारे में सिर्फ आपने इंफॉर्मेशन लगी, मे बी लाइक प्राइसिंग की वजह से आपने कोई चीजें नहीं खरीदी या अदर वे। गॉट इट? या कंपेयर। तो आपके जाने के बाद कस्टमर देखेंगे, उसके इससे ज्यादा कितने कस्टमर, दिन में हमारे पास 100 कस्टमर आए, 100 कस्टमर्स में से 30 कस्टमर्स ने हमसे पूछा लाइक एप्पल क्या प्राइस है। हमने बताया 200 रुपीज के। अब देखते हैं 3 डेज के बाद, ओके सर एप्पल इज लाइक 150 रुपीज केजी। सो एक्टिविटीज को भी ट्रैकिंग करते हैं। ओके। Market to customer and many more। Got it the point? Yeah. Now another thing is Salesforce architect। So I'm talking about the Salesforce architect. The Salesforce architect means like a multi-tenant। Multi-tenant like a use. Look like the Salesforce store data in a single database schema। सिंगल डेटाबेस स्कीमा की लाइक आप अपने घर एक ही जगह बनाना चाहते हो और मल्टीपल लोकेशन पे भी बना। यस और नो? तो Salesforce स्टोर डेटा इन अ सिंगल पैनल। सिंगल डेटाबेस स्कीम कि आप कोई भी कहीं भी किसी भी लोकेशन पे शॉपिंग करने जाइए बिग बाजार पे,
तो आपका जो डेटा है वो सेंटर पॉइंट पे जाएगा, और अब आप वर्ल्ड के किसी भी बिग बाजार शोरूम में चले जाइए, आपका रिकॉर्ड वहां पर आपको मिल जाएगा। यस और नो? So Salesforce store data in a single database. Means single database means maybe a single, there can be a same instance. Instance means server. There can be a single instance of a software server with multiple tenants. Look like a बैंक. So बैंक के अंदर आप जाते हैं, so एक सॉफ्टवेयर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो कि आपका मल्टीपल डिपेंड्स करता है कि आपका जो डेटा है वो किस तरीके से है। बट बैंकिंग के अंदर क्या, आप किसी भी ब्रांच में चले जाइए, आपका जो डेटा एक सेंट्रल लोकेशन पर एक पर्टिकुलर सेंटर सर्वर स्टोरेज के अंदर सेव है, और वहीं से वो मल्टीपल लोकेशन पे क्या होता है, रेप्लिकेट होता है। लुक लाइक अदर वर्ड में एक एग्जांपल देता हूं, लाइक व्हाट्सएप ग्रुप। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आपने एक मैसेज लिखा, बट वो मल्टीपल कैंडिडेट के मोबाइल पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो क्या वो इतनी कॉपी बनती है उस मैसेज की? नहीं। वो जो ग्रुप है ना, एक कॉमन ऐसा कंसोल बन जाता है कि अगर उस मैसेज में हम लिखेंगे तो सारी जगह दिखेगा, ना कि हर सिस्टम में जाके अलग अलग एंट्री लेगा। उस हिसाब से तो हमारा डेटा काफी बार यूज होगा। क्योंकि एक ही एंट्री की अगर मल्टीपल टाइम्स एंट्री होगी तो उस हिसाब से तो हमारा स्टोरेज ही कम पड़ जाएगा ना। So now other word is Salesforce is a single shared application service to several clients. एक सिंगल एप्लीकेशन पोर्टल है सारे के सारे कस्टमर्स के लिए। बेनिफिट क्या है? दिस मेक इट कॉस्ट इफेक्टिव। अगर हम 10 लोगों के लिए बार बार खाना बनाएंगे तो हमारी कॉस्ट ज्यादा आएगी, रेदर देन कि अगर हम एक साथ बना दें। यस सर। Yes. The development and maintenance cost must be entirely on by one client. So ऐसा नहीं है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया है वो देना पड़ेगा, नहीं, आपको सिर्फ अपनी मेंटेनेंस या डेवलपमेंट कॉस्ट देनी पड़ेगी। लाइक कॉस्ट का मतलब है कि जिसने सेल्सफोर्स पोर्टल बनाया है उसी को मेंटेनेंस कॉस्ट देनी है, जिसने होटल बनाया है मेंटेनेंस कॉस्ट वो देगा, लेकिन सर्विसेज जो यूज कर रहा है उनसे वो उसका रेंट लेगा। बट ये नहीं कि अगर आपके घर के पास लाइक एयरटेल का टावर लग रहा है तो एयरटेल वाले आपसे उस टावर को रिपेयरिंग का पैसा लेंगे। यस और नो? Yes. नाउ द अदर इज मेटाडेटा। Okay. Metadata is called a data of data.
अच्छा. So it used for development model. Okay. Like this allowed developers to only focus on building the applications. So like अब बेसिकली मेटा डेटा हमारे ना डेवलपमेंट के लिए मॉडल के लिए यूज किया जाता है, जहां पर हमारी क्या है एप्लीकेशन बिल्ड होती है, जहां पर हमें काफी सारी चीज चाहिए होती है. लुक लाइक कि अगर आपको शाही पनीर बनाना है, तो शाही पनीर एक चीज तो है नहीं, हमें शाही पनीर बनाने के लिए काफी सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है. यस और नो? तो उसके लिए मेटा डेटा यानी कि डेटा ऑफ डेटा की अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उस एप्लीकेशन में किस किस चीज के लिए आपको जरूरत है, किस चीज की आपको जरूरत पड़ेगी, किस प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी, कस्टमाइजेशन की पड़ेगी, स्केलिंग्स की पड़ेगी. तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके मेटा डेटा के थ्रू. Okay. But now the important part is API, application interface. Application process. So now the Salesforce provide a powerful source of API. Application interface provide कराता है. Got it? This help in development or deploying and customize customizing the Salesforce. So एक आपको ऐसा पोर्टल सेल्सफोर्स ने दिया है जहां पर आप अपना अकाउंट बनाइए, यूजर लॉगिन करिए, और आइदर या तो आप अपना डिप्लॉइंग कोडिंग के थ्रू अपना कस्टमाइजेशन पोर्टल या व्हाटएवर क्रिएट कर सकते हो, या कस्टमाइज ऐप और कंपोनेंट्स भी वहां पे दे रखे हैं, उसके थ्रू भी आप वहां पर डिप्लॉयमेंट कर सकते हो. Okay. Now next is Salesforce Cloud Services. Multiple cloud services provided by the Salesforce, like cloud, Sales Cloud, Marketing Cloud, Analytics Cloud, IoT Cloud, App Cloud, Service Cloud. There's a different thing is available. So now I'm just explaining you many things on our next class. I think so enough. So one more important part कि I'm not provide any notes. So मेरा जो पढ़ाने का वे है ना, वो मैं सारी चीजें इसी तरीके से राइट करके ही पढ़ाता. तो मैं कोई प्री डिफाइंड स्लाइड या वो यूज नहीं करता. तो अगर आपको नोट्स वगैरह बनाने तो आपको ये वीडियो ही रिकॉल करनी है. Okay, sir. Got it? So hope so you understand. Thank you. And anything else?